So, good morning, everyone. Today we finally start the much awaited course, that is ANUSHASHAN, correct? And today is the first batch and the first class of ANUSHASHAN course, that is, we are starting with GS paper 3 and GS paper 1. GS paper 3 will have a separate batch of 25 classes. GS1 will have a separate batch of 25 classes. Okay, so in one day you have to sit for 2 hours in each class, so total of 4 hours daily. Now, before we talk about the today's class, I want you to first of all divide today's agenda quickly into two aspects. One is, if we call this course Anusashan in Hindi means discipline. So in this Anusashan 2575 course, the first thing that is important is the broad features, which you all must be very thorough and very clear with. Broad features of this particular course. Now the first broad feature which I'll talk of is, it is highly exam oriented only. We are not going to beat around the bush of unnecessary jargons, of unnecessary stories, and of irrelevant jokes. Okay, so unlike me, who I am known for, there will be no jokes in the class itself. Okay, now joke आपके आंसर का खुद आप बनाएगा. Next, the most important aspect that we are going to take care in this Anusashan batch is around 60% or 70%, we can say, minimum limit is 60%. 60-70% of the questions will be repeated as it is in the examination, as it is in the official examination that will be appearing into. So the target is around 60-70% complete repetition or reflection, you can call it, in the examination hall. Okay, so mostly we are focusing on reflection of around 60-70% of exams question. I mean, no need to write this, just you have to you लिख रहे हैं क्या इसको? You don't have to write this, my friend, right? Of exams questions through our this 25 days 25 classes course. Okay, next, and the most important, we will say the most important point of this particular course is as far as possible we are going to integrate Arunachal special, and especially the topics related to Northeast and Arunachal wherever it is possible. Although we know that only GS paper 1 syllabus has been amended, correct? But if the question of Arunachal Pradesh economy comes in GS paper 3, can you write that it was not in the syllabus prescribed of GS3? No, because just a day before you have appeared in GS1. Yes or no? Panchayati Raj topic has been added in GS1. Obviously, that will not be asked in GS1. It will be asked in GS paper 2. If syllabus is mentioned, we have to give it in the examination. Now, it is irrespective whether we appear in that examination one day before or we write that question next day. Are you getting it? Fine. So, we are going to cover and integrate as well as cover Arunachal special topics wherever possible in GS 1, 2, 3 and 4 also. Okay. Now, if you have the sound issues, please restart your app, it will be solved. So these are the some broad features. Now this is not that much important. That is what we are going to do day to day. So once it comes to day activities in the class, how this class is going to progress, the first most important thing that we are going to target is 1 hour 10-15 minutes of classes each day, every day we can call it. Uske intensive follow every day, and 10 minutes we are going to do a quick recap of that particular day's class. This is going to be the day-to-day activities that we are going to follow.
Sound issues. Okay. Okay. So just give me a brief 10 seconds break. Just give me 10 seconds. Okay. So really sorry for this. As today is the first classes, so
you know, 2-3 classes are going on simultaneously, so that is why. Anyway, so now let us start our class, the first class of GS paper 3. The target area or the focus area that you have to focus upon over the next 25 classes, that is, it will take around 30 days exactly, okay. And when we say that the course will be over on 8th February, it has to be 8th February, okay. Now you will be curious about how can the entire syllabus be completed in around 25 classes. But my friend, we have done this in 2020 APPSC mains. 60 days were around roughly left, and in 15 days we covered one GS paper. 15 दिन में 15 classes we covered one GS paper. So we know the stuffs, we know what is in the store. But also one more thing that is a value addition this particular year is we have been training, we have been teaching these module papers since last 2-3 years. So most of you have already completed your GS3 and GS2. It is not expected, it is assumed that you have your economic basics clear, and you just need what we call it the art of answer writing, or maybe you just want your hands to dance, okay. So this is the main essence of the class. What about the printed notes? Printed notes will be provided. It will be the same notes as of Parampara, but the class may whatever you are being taught, whatever you are being told, those are the most important points which you have to keep in mind. 2 hours means it will be 2 hours class, okay, so that your time can effectively be managed. So this is all the basic things which we are not going to discuss later on. Fine. So today we are going to finally start with the GS paper 3 part. In GS paper 3, you must be knowing that GS3 is composed of economy, GS3 is composed of environment and disaster management, GS3 contains science and technology and internal security. The most important topics from exam point of view in GS paper 3 is which one? Which one? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Which one? Or more than one of the above? More than one of the above. Correct? Why? Because see, 4 questions will be there from science. If you don't write those 4 questions, around 55 marks will be gone. Done? Now again, environment, set questions are asked all the time. One question is always asked from environmental impact assessment, and one question se lekar 2 question always asked from disaster management. Now what kind of questions do you get from disaster management? From disaster management you get 2 types of questions. Either both of them can be asked or only one of them will be asked, but there will be no third type of question that will be asked. One type of question is they will give you a disaster, right, and they will ask you how to mitigate the threats, how to solve this particular disaster ka threat. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे इंडिया में what is the structure of disaster mitigation and response, right? What is NDRF? How the SDRF works during the time of disasters, during the time of exigencies? So these 2 questions are generally asked. One question from EIA is asked. So this part, environment part, my friend, and disaster management part can secure you, can give you solid 60 marks. Okay, so this reality has to be accepted. Now, once this reality is accepted, comes to science part. In science, 3 questions minimum आना ही आना है होगा, और maximum 4 questions will be there. Now, in science, there are some topics such as nanotechnology, biotechnology, and all these topics like artificial intelligence and all. Usme, I will advise you to do one thing: just prepare one answer of nanotechnology, and just remember the definition of biotechnology. Okay, because all the technologies that will be asked, uska bas as it is, we have to copy paste the application part, and just the definition has to be changed. This is what is expected from you. वो आपको faculties will tell you. In internal security, again very important reason is if you have public administration optional, if you have political science optional, or if you are going to write a wonderful essay and you want some content, this topic becomes very important, especially for your personality development also. Fine. Then comes the economy part. Jiska bina, again we call it all the subjects mein somehow economy is involved. Hoga? Out of the 20 units of the syllabus, 10 units are dedicated to economy.
How many questions will be asked? Minimum 7 questions, maximum 8 questions will be asked from these 10 units of the syllabus. Unit 1 to 10 is economy, correct? After unit 1 to 10, we enter into the domain of science and environment. Science and environment are around 5-6 questions together. If we compile, then around 6 questions will be there, and around some 4-5 questions will be there from the internal security part. Minimum 4, maximum 5 tak jata hai. It is a very comprehensive unit that we have to keep in mind. My name is Amritanshu, by the way, and I will be teaching economy, and I will be taking the internal security part. Okay. These two topics will be taken by Ramneek Singh sir. After I cover the economy or whatever is the schedule that is given to you, these topics will be completed. Once he covers those topics, I will again come back to take this internal security part. Hope I am clear. Now, focus will be on answer writing. There are 2 pillars of this course: 1 hour of class, 1 hour of answer writing. Okay. Now, economic development and economy is the topic. Syllabus. See, don't write just if you have the syllabus with you. Please open the syllabus on the first page of that booklet that you have. That is the syllabus of economy. Okay. Now, once you have that syllabus with you, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 units. Fine. 1 to 10. Look, unit 1 is about Indian economy. Don't write it, just understand the sequence. And we have to talk about planning, we have to talk about resources, we have to talk about growth, development and employment. Every year one question is there. Either they will ask you from planning or they will ask you from employment, but they are going to ask you a question. Hoga? See, once we, irrespective of Indian economy or any economy consists of the secondary sector and the tertiary sector. There in every economy that we see, prime हमारा दिमाग जाता है कहाँ पे? Agriculture. And once we talk about agriculture, my friend, can you locate unit number 7, unit number 4, unit number 5, unit number 6 from agriculture part or the primary part? Why? Because in order to improve the agricultural GDP, what do you require? In order to increase the agriculture GDP, what do you require? You require input, seed, land, water, everything that is produced in the country, it requires land, labor, capital, entrepreneur. So for agricultural GDP, what do we require? For agricultural GDP, we require first of all land, then we require water, then we require soil, then we require fertilizer, seeds, capital, loan. Yes or no? Farmers are required as an entrepreneur. So unit 7 we start with land reforms. Okay, land is the most important input for agriculture or for any other activity. Then comes the unit 4 part, cropping patterns that you can see, cropping patterns, subsidies, technology for farming. Unit number 5 and 6, it is quite clear. 5 is entirely about agriculture and unit number 6 is associated with, if agriculture ke upar we focus a lot, what will happen? There will be surplus production and surplus production will lead to extra food. Export to hoga but extra food, and that extra food ko bola ja raha hai process karo. You process that extra food that is there with you, food processing, and you process it and please gift the people diabetes, lifestyle disorders, and you please keep on giving them. This is also the ill effect of globalization that we have to look into that. This is also one of the harmful impact of green revolution ना. तो बहुत सारा पैसा आ गया ना, बहुत सारा पैसा आने के बाद इंटेंसिव फूड कल्टीवेशन हुआ, इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन हुआ, एंड फूड प्रोडक्शन के बाद एक नया प्रॉब्लम came to us, that is in the form of food processing industries, correct?
So we are concerned with this primary sector. If you see carefully, in secondary sector we talk about industries, yes or no? So there are three kinds of industries mostly in every economy, right? What are those three kind of economies? What are those three kind of uh, industries? सबसे important, yes, manufacturing industries. उसके बाद can we call it construction industry? Okay. What is the difference between secondary sector and tertiary sector? Tertiary sector we cannot touch it, we can only feel it, the development we can only feel it, but in industries we can see this is the real output, this is the backbone of any particular economy if it has to grow. If a steel plant is installed, my friend, okay, if the steel plant is installed, because of that steel plant lot of laborers will get jobs, okay, lot of transportation development will take place. And in any business, suppose करिए कि आप अंडा बेचते हैं, मान लीजिए you are a wholesaler of eggs, so you must have a farm, मुर्गी का फार्म होगा ना. After selling eggs you decide that I am selling eggs to the retailers, you are a wholesaler, I am selling eggs to the retailers and retailers are further selling it to colony shopkeepers, the shopkeepers in colony, and they are making a lot of money. So why not I myself become a retailer, or I hire 10-15 people and I open their retail shops for them. And if they are making profit, I can also make profit ना. तो हम अंडा होलसेलर बनते बनते हम होलसेलर भी हैं and I also become a retailer. How does the goods move, my friend? Something is manufactured, after before you manufacture you need what? Raw material. This is what a supply chain looks like. If I am a manufacturer, I could think of becoming a raw material ka sourcer. I am a miner, okay, and I used to mine minerals. क्या हम मदर अर्थ को कुछ पैसा देते हैं? No, for me the cost is zero, correct? And now I sell this iron ore to a steel industry. That steel industry now makes huge large sheets of steel. That steel thin जो sheets होता है steel का, वो utensil maker को बेचता है, correct or not? This is how it goes. अब जो miner है वो सोचे कि why not let's open a steel industry. हम ही रॉ मटेरियल है, हम जिसको स्टील इंडस्ट्री 10 रुपया का आयरन और आई एम सेलिंग इट, ही इज मेकिंग 1000 रुपीज आउट ऑफ इट. सो व्हाई नॉट आई एम अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, लेट मी बी आल्सो बी अ मैन्युफैक्चरर, कि मेरा ही आयरन, मेरा ही मिनरल और उसी से हम स्टील बनाएंगे. दिस इज व्हाट गोइंग फॉरवर्ड इन योर बिजनेस. ओके, this is going forward in your business. Now suppose if you have a restaurant and you it is a biryani restaurant है बहुत famous, so you are buying chicken from Akashdeep. After some time you realize कि मेरा तो यही धंधा है, why not start having a poultry farm? तो you are going forward or going backward? Backward जा रहे हैं आप. Suppose this is the restaurant, restaurant को raw material चाहिए chicken का, आप कहीं और से खरीद रहे थे. Now you have decided to open a poultry farm yourself. Now you are going backward in your business. This in economy is known as forward and backward linkage. And this is what is mentioned in the syllabus unit 6. Upstream and downstream supply chain management. Can you see that? See why that is mentioned in unit 6 in food processing industry. Why that is mentioned? Because farmers are not making money. 4, 5 and 7 is not helping. So farmers should make use of that extra food grain that the farmer is producing. Fine. So that is why supply chain में सिखाया जा रहा है कि farmer अगर wholesaler है तो farmer should also try to be a retailer. Means Gangadhar should become Shaktiman whenever the time comes. Then only the farmer's welfare can be promised. Are you getting it? The sequence समझिए. Adani, for example, okay, you look at Adani's example. Adani was selling electricity. Then Adani decided that I am buying electricity from Tata and I am selling it to the people. I mean, it was an electricity distribution company, we call it discoms. Then Adani decided, let's do one thing, why not produce electricity? So Adani started producing electricity in a thermal power plant. Then Adani realized that a thermal power plant needs raw material as coal, so I have to buy coal. So Adani started buying coal. After that, Adani decided, rather than buying coal, why not own a coal mine?
So Adani opened a coal mine. This is what? This is backward linkage, going back in your business. Okay, this is linkage. Link बना रहे हैं आप अपना supply chain में, wholesaler, distributor, retailer, provider, everything you are becoming. So Adani started owning a coal mine in Australia. Now, in order to bring coal from Australia to India, what you need? जहाज, you need ship. Now ship से coal तो आ रहा है, लेकिन अब coal, अब जहाज खाली जा रहा है. Adani decided rather than depending upon others, why not enter into the shipping business? So Adani opened a shipping business. Then he realized कि इंडिया से क्या भेजें ऑस्ट्रेलिया. Then he said कि जहाज तो कोल तो लेके आ रहा है, वो खाली लेके जा रहा है. In order to further integrate your business, integrate your supply chain, Adani opened Adani Wilmar Company, जो फॉर्चून का कंपनी है. फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, कच्चा तेल जो हम लोग फॉर्चून का सोयाबीन चंक्स आता है, फॉर्चून लिखता है. So that belongs to Adani, Adani Wilmar Foods. So he entered into that business. This is integration, and this integration Modi ji wants the Indian farmers to have. They don't, Modi ji does not want the Indian farmer to remain in primary sector. Modi ji wants the Indian farmer to come up in the manufacturing sector. Why? Because if manufacturing sector is developed, it has a very strong backward and forward linkage. Whenever this will develop, a township will be created around the city. When more and more people will be entering into this part, this will be developed, and further this will be developed. Whenever a township will be there, more and more people will buy e-rickshaw, auto rickshaw. Yes or no? The first key term that I want you to know in economy is forward and backward linkage. Whenever in economy anyone wants to grow, or any question comes, suppose in Arunachal Pradesh the question comes, ki what steps will you suggest for development of industries in Arunachal Pradesh, or in Northeast for example, suppose this rough question is asked, we have to use the terms forward and backward linkages extensively. Just a railway, if railway line is built from Naharlagan to Zero, suppose, so railway will require a lot of steel, correct? Railway will require a lot of engineers. What is happening? Backward linkage is getting stronger. When railway will be there, tourism, transportation, every service will get मजा. तो इसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज दोनों तरफ. रेलवे में पैसा, एक पैसा भी रेलवे में लगाना, it will lead to multiple things. So this is the backward and forward linkages that you have to keep in mind. So manufacturing, construction, food processing, all these will come under this part. Now, उसके बाद the next thing is tertiary sector. What comes in tertiary sector? Financial services. Whatever is the service that will come under the tertiary sector. Financial services India में जा रहा है, tourism service जा रहा है, education service जा रहा है, right? You are paying fee, we are contributing to the GDP of the country, correct? But you cannot touch what I am saying, you can just only feel or observe what I am saying. This is service, this is education service. So देश के economy में these three things they contribute a lot. The first point that it is obvious that all of you should know from this part is what is the contribution of each sector to our economy. Very important point to know. So roughly what you know, tertiary sector contributes, if India creates 100 rupees of GDP, so the tertiary sector contributes how much? Everybody, 54%. Okay, 54, depending on 54, 56 होता है, घुसना नहीं है उसमें. But we should know that around if 100 rupees is produced as GDP of the country, 56 comes from tertiary. Secondary, छोड़िए, agriculture around 18%. Okay, so 56 and 18, 72, and left around 28% comes from secondary. अब देखिए कहीं पे you will find 26, 24. Don't be bogged. Remember this roughly. This is the figure that you have to keep in mind. Even if you write 55, it is fine. So 56, 18, है ना? So 18 3 जा, 18 into 3 is 54. So roughly you can remember it like this. ठीक है? Roughly 18 3 जा 54. Remember it. And whatever is the gap, you can write it as secondary. This is the first point that every mains aspirant should know, and always keep this thing in your mind. First point है ये जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब देखिए सिलेबस कैसे मूव कर रहा है. सेकेंडरी सेक्टर हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में. Please read the syllabus of unit 8 again, everyone. Syllabus has to be memorized. What is unit 8? Unit 8 says
liberalization, effect of liberalization, changes in industrial policy, and what are the effect of changes in industrial policy on industrial growth. Okay. Now comes the transportation sector. Transportation is what we can feel, yes or no? So the tertiary sector ka bare mein we have to study in unit number 9. We have to study about railways, airways, palnaways, jimkanaways, and all those things we have to study in this part. One question APPSC also bhi पूछता है, पूछा भी है airways से. One question has been asked by APPSC in 2020 from airways. This year what they are going to ask? They are going to ask waterways, and they are going to ask waterways, especially they are going to ask Sagarmala Pariyojana this time. Okay. Now after that, अब इन सारा चीजों को प्रमोट करने के लिए what do you need? You need money. Correct? You need money, and the money that you need is known as investment. Why? Because whenever the government invests into this or this, most of the time that investment is capital investment, or when the government spends something, we call it capital expenditure. Are you getting it? So investment is of two types: when the government invests and when the private sector invests. So government ka investment is known as public investment, and the private investment is known as obviously private investment. Correct? In other terms, the government investment jo hota hai, investment is different thing, my friend, and expenditure, revenue expenditure is different thing. You take loan from the bank and you took your partner to a date, and you are saying that I have invested some 10,000 rupees in Choi Wongs. Is this investment? It is not. It is revenue expenditure. What is capital expenditure? When you buy yourself something out of those 10,000 rupees, capital expenditure are those things which are assets. Okay. Whenever by an expenditure an asset is created or a liability is thrown away, that is only known as capital expenditure, or that is known as investment. So investment चाहिए इन सारे चीजों को sustain करने के लिए, and investment is what we need to understand in unit number 10. Models of investment in economy that we have to keep in mind. How to channelize this investment? We need government, right? How to channelize this investment? We need government, and whenever government manages this investment, my friend, which is known as government budgeting. Correct? So in order to take care of this entire Indian economy, the most important topic is unit number 3, that is government budgeting. This is how we have to proceed in our course. What we are going to do, how we are going to proceed. अब ये सारा चीज आप करोगे, you will achieve economic growth, but maybe somehow somewhere down the line you might be lagging on economic development, right? And in order to fulfill the economic development, we need unit number 2, that is known as inclusive growth. There has been no examination of UPSC in the last 10 years since the syllabus changed that a question on inclusive growth has not been asked. Okay, so uska aisa hai hisab kitab ki we have to just prepare dinner, lunch from home on the inclusive growth question, and we just have to go and vomit that whatever we have learned at home. Inclusive growth में बहुत simple setback, मतलब simple है हिसाब किताब जानना कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो अचीव कर लीजिएगा, डेवलपमेंट कैसे अचीव कीजिएगा, विच इज मोर सब्जेक्टिव? डेवलपमेंट. Growth is objective. How? GDP. But my friend, we know about the flaws in GDP. What is the flaws in GDP? GDP बढ़ता घटता कैसे है? Quantity into price. If the quantity is 10 and the price of current year is suppose 50 rupees, so GDP will increase. But again, if this 50 next year because of inflation becomes 70, then also the GDP will increase. This is known as real GDP. So the game with real GDP will only be solved if inclusive growth is achieved. Are you getting it? So last में करेंगे inclusive growth और last में करेंगे इसको. करेक्ट? बात समझ में आ रहा है? अब शुरुआत हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर से, फिर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री, फिर हम लोग देखेंगे ये. इन सबको मैनेज करने के लिए we'll see investment at the last. After investment we will see the last topic of economy, that is inclusive growth. Is the plan fine?
Now we are going to start with today and tomorrow we are going to see unit number 1 completely. After unit 1 we go to agriculture part. The schedule has already been given to you on the workshop day. उस PDF में या जो आपके handout में होगा उसमें आप देख लेंगे, ठीक है. Now as far as printed notes are concerned, you can, सबको मिलेगी आपको first booklet, you will be getting the same booklet, but don't rely on the booklet. You don't have to read the booklet, you just have to focus, go through the classes only. Are you getting it? Class is essence. 75 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो. अब बार बार बोलना ठीक नहीं है, बट 15-16 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा हर पेपर से. इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग, फोकस ऑन योर टाइम on writing, rewriting those questions that you are coming across in the class itself. Okay, as far as current affairs are concerned, it will be covered. Let me do the hard work, you please sit back and relax. ऐसा पीटी नहीं है कि 2 क्वेश्चन छूट गया तो नहीं हुआ कट ऑफ में, है ना. So this is not PT. टक 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 वाला अप्रोच नहीं चलेगा यहाँ पे. Most important point is you have to think at home. If you are not thinking and if you are only studying, you will not clear again. Most important fact is thinking of a question. Thinking, it's not important to write all the answers, my friend. Speed is only important. Speed will come, but first of all question को देखने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे लिखेंगे हम. Visualization is the key. Okay, some key terms are coming to your mind or not. Now come to unit 1, Indian economy. What are topics we are going to cover? देखिए, see, I am just speaking loudly. I am not speaking in a fast. I am not speaking, क्या बोलते हैं उसको? Only English, no Hindi. Indian economy and issues related to planning. We will be covering resource mobilization, growth, development and employment, right? We are going to cover it tomorrow. Now, so issues related to planning and Indian economy. First of all, we are going to see the state of Indian economy and some key terms that you have to keep in mind in general for your answer, and we are also going to see some previous year questions and what could the questions be while doing this part. So state of Indian, the most common point that you have to keep in mind is everything is fine in Indian economy. There was COVID setback. After the COVID setback, we have regained the momentum. This is the common general line. Now, how do you glorify this particular line depends upon your English writing skills, but this is the baseline. How do we come to know about the state of Indian economy? We come to know it via the budget and the economic survey data only. Okay. Now, obviously the budget is going to be presented in around a month's time from here. So again, by that time our economy will be over. Don't worry again. यहाँ पे हम पिछले साल का डेटा लिखेंगे, इसको याद करना है और बस इस डेटा को रिप्लेस करना है whenever we take a budget and economic special classes after the budget and economic survey is released again for this year exam. समझ रहे हैं बात? अलग से एक स्पेशल क्लास होगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का, 1 hour 1.5 hour ओनली फॉर मेंस आंसर राइटिंग थिंग्स. ओके, इट विल नॉट बी फॉर प्रीलिम्स. सो उस समय हम लोग उसको बस अपग्रेड कर लेंगे. अभी के लिए आवर ओनली सोर्सेज लास्ट ईयर बजट. की टर्म्स क्या जानना है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? सी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू नो इज, लेट्स सी द बजट डेटा. Budget 2024-25. Now this will be soonly, it will be replaced, but as for now let us keep it. So we can do one thing, just remember the data 2023-24 and it has to be incorporated, whatever 2-3 points I will be writing it. Total expenditure. See, whenever we call it that the government's का total budget, government का total budget जो है, फाइन. नाउ गवर्नमेंट का टोटल बजट को हम लोग रफली बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर. और बजट का साइज कितना होता है? हाउ डू वी कॉल इट? व्हाट इज द साइज ऑफ द बजट?
The size of the budget depends upon revenue expenditure, capital expenditure or both. If we casually say government का budget size कितना है, what is the size of the budget? A, revenue expenditure, B, capital expenditure, C, both. Total. So total expenditure is the size of the budget. In 2023 and 24, the size of the budget was around 44 lakh crores. Remember this data. Okay, the size of the budget was 44 lakh crore, means the government was going to invest some 44 lakh crore last year. This year मतलब 2024 से लेके 25 के मार्च तक, okay, till March 2025, this year the size of the budget is roughly around 48 lakh crores. Total expenditure we are concerned with. Okay, now once we are concerned with this total expenditure part, yes, the next point is related to the capital expenditure and the revenue expenditure. Now important point is capital expenditure. Few things again that you have to keep in mind is whenever the government does revenue expenditure, revenue means पैसा को जो मजबूरी है आपको खर्चा करना, salary, schemes, pensions, grants to the states, this is revenue expenditure. What is capital expenditure? Those expenditure which creates an asset for you. Okay, those expenditures are known as capital expenditure. So capital expenditure karna is very good. So government capital expenditure is around 11.1 lakh crore this year, and last year it was 9.5 lakh crores. Ab, when the data of 25-26 will be added here, you have to memorize at least this year's, ये साल का डेटा आपको याद रखना पड़ेगा. जब अभी एक महीने बाद जब बजट आएगा तो क्या पता चल रहा है इसको देख के? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. गुड और बैड? वंडरफुल. ओके, वंडरफुल. नाउ लेट इट बी, इतना पे छोड़ देना है. इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूज में भी चल रहा है. स्टडी ऑल्सो a news came from this topic, is known as tax to GDP ratio. Now do you know what is tax to GDP ratio? What is country's GDP? अच्छा, one more thing, important thing is, अच्छा okay fine, do one thing, इसको आप मत, you don't cut it because I can erase it, you cannot erase it. So do one thing, before, below this tax to GDP, write the GDP of the country. Rough data of GDP has to be kept in mind first. So GDP of the country last year was 295 lakh crores. 295. The GDP last year was 295 lakh crores. Fine. Now this year the GDP is 326 lakh crores. Remember this roughly. Achha, this GDP is real GDP, nominal GDP. What do you think? This is the nominal GDP. Nominal GDP depends upon current year prices. So this is the rough data. अब इसके बाद आता है tax to GDP ratio. What is tax to GDP ratio? I expect a question from this part, tax to GDP ratio this time. एक tough question यहाँ से पूछने का chance है. Before we go into the details of the question, what is tax to GDP ratio? How will you explain it? Anyone? Quickly. Nominal GDP, real GDP. PT question हो गया ये. Nominal GDP ना. See, अब 295 lakh crore is the GDP ना. Last year मान लीजिए, जैसे government, if this is the government's budget, government budget is of three types, मतलब technically it is two types. One is the revenue of the government and the other aspect is the expenditure. Revenue comes from two places. One is revenue receipts and other is capital receipt. Revenue receipt, capital receipt. Revenue receipt में we have tax and non-tax. We know this fact na. So if the government budget is 44 lakh crore, it must be, this is the most important source of government revenue. Suppose this is 29.5 lakh crore. Suppose. So 29.5 lakh crore is the tax collected. Now tax is of two types, direct and indirect, but total tax is 29.5 lakh crores. What is the GDP?
295 lakh crore, correct? So if we call it tax to GDP ratio, how much it will be? 29.5 divided by tax to GDP, यही तो है tax to GDP ratio. How much? हाँ 7.4, 10 नहीं यार, 1/10. ये तो 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. तो 1/10 is equal to how much? 10%. So this will come as, यानी माय फ्रेंड देश का जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूशन किसका है? टैक्सेस का है. ये सिंपल हिंदी मीनिंग हो गया इसका. ओके, दिस इज अ सिंपल हिंदी मीनिंग. अब this year whether the tax to tax to GDP ratio, suppose next year it becomes 12, good or bad? If from 10 it becomes 12, good or bad? Pakka? Why? This will be the question in the examination. What is the significance of tax to GDP ratio? लिखिए क्वेश्चन 1, राइट. क्वेश्चन 1 जीएमडी लिख दीजिएगा, जय माता दी, या क्रॉस बना दीजिएगा ना. 6 अप्रैल का पहला सुबह का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हुए अपने कॉपी में लिखिए. व्हाट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो? व्हाट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो? elaborate its significance. Elaborate its significance. Elaborate its significance in India's economy. Elaborate its significance in India's economy. ठीक है. अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है. तो पहला काम क्या होगा? इंट्रोडक्शन. इमीडिएट टैक्स टू जीडीपी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें. करिए खुद से. डू इट क्विकली इन 2 minutes. राइट 3 lines. इंट्रोड्यूस खुद से करिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो. कुछ भी लिखिए, कुछ भी, गाजा कुछ भी लिखिए. पहला है कुछ नहीं, जस्ट राइट एनीथिंग. इट इज अ इंडिकेटर. नहीं सुनिए सुनिए, यही तो लिखे होंगे ना यार. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज टैक्स कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टोटल जीडीपी. करेक्ट. इट इज यूजफुल, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपल रीजन्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम टैक्स टू जीडीपी रेशियो? क्या हमको पता चलता है टैक्स टू जीडीपी से? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, static question. Now tell me 2-3 significance. What do we come to know from a tax to GDP ratio? Suppose my tax to GDP ratio is 10%. Next year it is 12%. Right? What can I learn about my country? This is the question. बताइए कोई 2 significance बताइए. Tell me 2 significance. हाँ? Elaborate. 1 line more. हाँ ठीक है, elaborate. इन्होंने कहा कि हमको पता चलता है इंडिया का फॉर्मलाइजेशन का स्टेटस. How far the economy has formalized. See, if the economy is formal, what do we mean by that? More and more people are under the tax bracket.
but it does not mean that people are paying taxes. 5 लाख तक तो नो टैक्स ना, तो वाइडन तो हो गया टैक्स बेस, फॉर्मल हो गया इकोनॉमी, बट हाउ डू वी नो इट that people are paying or not? Bhai, we can be exempt also na. If I am earning 4 lakh rupees, I will be exempt. But yet, chalo. मतलब status of formalization of economy, we come to know from this part. Very good. What other significance benefit from higher tax to GDP ratio अगर हो गया, what do we know? Else what do we know? How can you be so sure? सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है हायर टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना, तभी तो है ना. इट मींस हायर टैक्स कलेक्शन हो रहा है. नहीं, करेक्ट है आप, पर सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर बात है. हायर टैक्स कलेक्शन इज हैपनिंग. अब विच टैक्स वी डोंट नो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वी डोंट नो ना, बोथ इन फैक्ट. if direct tax collection is more, suppose if direct tax collection is more, what does it mean? It means economy is growing for sure. If indirect tax collection is more, what is indirect tax? What are indirect taxes? Example, GST. More GST is coming to the government. It means GST is consumption based tax, destination based tax. Consumption is increasing. Very good. Online में कह रहे हैं more revenue for government. 100% yes. Government का budget size has increased. It will increase ना? Correct. Revenue receipt is increasing. Consumption based economy is there. Trade is taking place. तभी तो GST हो रहा है. So trade is taking place. Correct or not? What else? Compliance, tax administration is efficient. यही सब point होगा ना यार, लिख लेना फटफट. It means trade improvement because GST आ रहा है सबको, ट्रेड इंप्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कॉम्प्लायंस हो रहा है, इसका वी कैन कॉल इट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कॉम्प्लायंस. व्हाट अदर पॉइंट? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट, ट्रेड में इंप्रूवमेंट, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. व्हाट अदर पॉइंट्स? और सोचिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हाई है तो और क्यों नहीं दे सकते. ट्रेड इंप्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम लोग बोल सकते हैं वी आर गोइंग, वी आर प्रोग्रेसिंग. और क्या इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है टैक्स को बढ़ने का? यस, कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग. करेक्ट. व्हाट एल्स? अच्छा, गवर्नमेंट का अगर साइज बढ़ रहा है बजट का, तो या फिर अगर डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है ना, मान लीजिए अगर फॉर्मुलाइजेशन भी हो रहा है इकोनॉमी का, तो माय फ्रेंड कैन वी कॉल दैट मे बी समहाउ डाउन द लाइन यूनिट 2 क्या हमको याद आ सकता है अपने आंसर में? हाँ क्या? वो तो है इंक्लूसिव, हमको ही पता है. डोंट टेल मी द टॉपिक ना, टेल मी व्हाट एग्जांपल फ्रॉम यूनिट 2 विल कैन बी यूज्ड इन द आंसर. उससे क्या? more people are coming out of poverty. Poverty reduction, we can write it. Poverty reduction is one line which can be applied everywhere in economy, in agriculture, in industry, in everywhere. Why? Because of inclusive growth topic. So unit 2 is a value addition by default in all the units of the economy answer. अब inclusive growth को ध्यान रखने के लिए what do you need? You need SDG का याद है, पीटी को वापस खोलना पड़ेगा. SDG 1 2 3 4 ऑलवेज एक ही चीज चेपते रहना है, उसके अंदर घुसाते रहना है. तो फिंगर टिप्स पे होना पड़ेगा SDG, और फिंगर टिप्स पे होना पड़ेगा यूज करना है, मतलब ये टिप्स है. दिस इज द टिप्स दैट इन एवरी आंसर ऑफ इकोनॉमी, दिस इज द मतलब टेक आउट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एवरी आंसर ऑफ इकोनॉमी आई मस्ट बी फाइंडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ का रेफरेंस. इफ दिस इज नॉट देयर, योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट. व्हाई? बिकॉज अभी मैंने ये बात बोल दिया. करेक्ट. 200 लोगों में से 20 आदमी तो जरूर सुनेगा, मानेगा, बाकी 180 लोग तो नहीं मानेंगे. दिस इज कॉम्पिटिशन ना. एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड. अब इनविजिबल हैंड मैंने डाल दिया है, अब आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन यू. सो पॉवर्टी रिडक्शन कैन बी वन ऑफ दिस. सिंपल है क्वेश्चन, ये वार्म अप क्वेश्चन था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 0 होगा. नाउ लिख लीजिए एक लाइन. द टैक्स टू जीडीपी रेशियो is the tax to GDP ratio of India is around 11.8% this year. Last year it was 11.7%. Improvement है होगा. This is an improvement.
करेक्ट। उसमें लिखिए एक लाइन, बस आंसर में एक लाइन, लास्ट लाइन लिख लीजिए कि इंडिया डिस्पाइट सीइंग हायर ग्रोथ, इंडिया डिस्पाइट सीइंग, SEING, इंडिया डिस्पाइट सीइंग हायर ग्रोथ has struggled to widen, has struggled to widen, has struggled to widen the tax base, has struggled to widen the tax base because India has still a low tax to GDP ratio, India has still a low tax to GDP ratio when compared to the global average, when compared to the global average, अराउंड ग्लोबल एवरेज जो है अराउंड 15-16% तक जाता है ना। सो दिस इज वन सच एरिया है। अब इसको जरूरी नहीं है सॉल्व करना ही है, बिकॉज टैक्स देने के लिए सबसे पहले ये अच्छा बात भी तो नहीं है ना यार, गरीब देश में आप जबरदस्ती सबसे टैक्स ले रहे हैं, हर चीज में टैक्स, व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें भी टैक्स, तो दिस इज नॉट गुड। मतलब उतना भी वाव खुशी वाला फीलिंग नहीं है, बट स्टिल ठीक है, मतलब पिछले साल से बड़ा है, दिस इज अ गुड पॉइंट दैट वी हैव टू कीप। और फर्स्ट टाइम इतिहास में ऐसा हुआ है 15 years में, दे से दैट फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज नाउ 57%, और काफी दिस इंक्रीज हैज बीन अ फेनोमेनल इंक्रीज दैट दे जनरली कॉल इट। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें राइट वन लाइन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24, राइट, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24 India adopted three-pronged policy. India adopted three-pronged, PRONGET, three-pronged policy to come out of the pandemic. To come out of the pandemic. Remember these three things. कहाँ पे यूज करना है बताते हैं। Public spending on infrastructural projects, on infra projects, public spending on infra projects, on infrastructures maybe. See carefully देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब यूनिट 9, और यूनिट 9 का मतलब हो गया एनर्जी, रोड, रेल, एयर, वाटर। ओके, नाउ व्हेनेवर वी इन्वेस्ट इन रोड, सपोज नीचे जो NH419 जा रहा है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट हैज बिल्ड दिस रोड itself or by PPP, public private partnership, the road which is passing नीचे में वो PPP से बना है ना, गवर्नमेंट खुद बनाया है? सेल्फ। जब गवर्नमेंट सेल्फ रोड बनाता है तो उसके लिए एक इकोनॉमिक टर्म है इन्वेस्टमेंट यूनिट में, व्हाट डू वी कॉल दैट? व्हाट इज अपोजिट ऑफ PPP? अपोजिट इन द सेंस कि PPP का पहले क्या होता था, तब वो PPP आया। PPP is public private partnership, but this road you are saying that government has built it itself. ये मॉडल क्या होगा? पब्लिक स्पेंडिंग ही है वो, बट मॉडल क्या होगा? EPC we call it, engineering procurement construction, where Tichkule company has been given the tender. Tichkule and Tichkule, TK Enterprises, they have been given, full form is not Tichkule, Akshay Kumar wala company hai Tichkule. They have been given the tender. Now they are making it, government will give money. It is just like our normal, हम लोग घर में जो लेबर लेते हैं उन्हीं के जैसा ये सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का खुद का है होगा, just that someone else has built it on a normal contractual basis. So this is the EPC model. Now अब EPC में गवर्नमेंट ने जबरदस्त खर्चा किया है रोड, रेल, एयरपोर्ट ये सब बनाने में इन द लास्ट 5-6 years. उसमें हम लोग का भी एयरपोर्ट आता है, करेक्ट? Who builds there are two kind of airport, major and minor. Itanagar is a minor airport. Who builds minor airports? AAI. Okay. Who builds major airport? AAI can itself build it, or AAI can have a PPP model on that, जिसमें वो
रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है प्राइवेटली ओन्ड है ना, बॉम्बे एयरपोर्ट है, अडानी ओन्स 74% इन द बॉम्बे पार्ट, सो दैट इज पीपीपी पार्ट. नाउ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट का अदर वर्ड है कैपेक्स. इट मींस, एक लाइन आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली बीन इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वी कॉल इट कैपेक्स. ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, है ना, लास्ट 5 ईयर से बोल सकते हैं आप ऐसा. We can say that last year the capex was this, it has increased significantly by more than 10% होगा. ये मान लीजिए 10 है, suppose this is 10 lakh crore. What is 10% increase of 10 lakh crore? 11 lakh crore. पर ये तो 9.5 से 11.1 हुआ है ना. So this has been a more than 10% increase capex में ना, लेकिन revenue expenditure उतना increase नहीं हुआ है. So this is where गवर्नमेंट का प्रायोरिटी इज वेरी क्लियर. जब हम लोग बजट पढ़ेंगे तो विल सी व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ 3 अप्रोच पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट मींस गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली ऑन कैपेक्स. नाउ माय फ्रेंड अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज इट मीन? if public matlab government, if public investment is more than private investment, what does it mean? What is the outcome? What are the takeaways? What can we observe from that part? कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज लेस, तभी तो गवर्नमेंट का ज्यादा है ना. व्हाट इज द टेक अवे? बिजनेस एक्टिविटीज, मे बी बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर. कैन वी कॉल इट और नॉट? वाज देयर अ लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर? यस, इकोनॉमिक सर्वे कहता है क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा पैसा डूब गया, सो दे वर नॉट एबल टू कोप अप with this. So government का ये बढ़ना is also, it means it is good thing also, but it also means that private sector is not present. If government capital expenditure is less than revenue expenditure, it means poverty is there. If capital expenditure का rate of growth is more than revenue expenditure का rate of growth, it means government is now focusing on heavy infrastructural projects. Heavy infrastructural projects आप बनाएंगे तो उसका backward linkage और forward linking होगा. And this backward and forward linking term is very important for giving employment opportunities. The next thing which the economic survey says the government has done is modernization of public administration. Public administration modernization. So powered optional student, be very alert. This is one of the important observation of economic survey. Public administration का modernization हुआ है. What do we mean by this? It means digitalization of service delivery. Digitalization of service delivery has been the norm. Digitalization of service delivery. Next, and the third thing which the economic survey says is the concept of Atmanirbhar Bharat. What is Atmanirbhar Bharat? Self-sufficient, self-reliant. Okay, we call it self-reliant. इसमें एक लाइन लिखिए, Atmanirbhar Bharat has two components. Atmanirbhar Bharat has two components. First, targeted relief. ज्योग्राफी वाला रिलीफ नहीं दोस्त. टारगेटेड रिलीफ मींस गरीबी होगा, गरीब लोगों के प्रति एक टारगेट है आत्मनिर्भर भारत जो पैंडेमिक के समय में गवर्नमेंट लॉन्च. एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. Write a question. Write one question. Today is the first day, तो थोड़ा सा साथ में चल रहा है. इंडियन इकोनॉमी है उस तरह का, थोड़ा सा मिला के चलते हैं साथ में. इट विल गेट ऑर्गेनाइज्ड वंस वी मूव इनटू द डिटेल टॉपिक्स. ठीक है कि the reforms, write the question, the reforms
implemented the reforms implemented in recent years, the reforms implemented in recent years, the reforms implemented in recent years have laid the groundwork in recent years have has laid the groundwork, LAID has laid the groundwork for a resilient economy, groundwork for a resilient economy, full stop. However, additional reforms are necessary. However, additional reforms are necessary to accelerate economic growth, and sustain it at higher levels, comment. Okay, now see here, question. The reforms implemented in recent year, what do we mean by the recent years terms? कितने साल आप मान के चलते हैं मोदी जी? 10 years. Okay, ideally 10 years. The reforms initiated in the last 5, 6, 7 years, 8 years, 10 years has laid the groundwork for a resilient economy. Correct? ये लाइन आपको बोल रहा है ये. उसके बाद कह रहा है however और फास्टर ग्रोथ के लिए और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए we need some more reforms. Correct? This is the question. This is 2023 UPSC question. थोड़ा सा इसको modify किया गया है बस words में. This is 2023 UPSC question. Very general question. This is a very general question about entire unit 1. Nothing else. अब क्या करना है इसमें हाथ चलाने के पहले, क्या दिमाग में लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखना. देखिए अब ये क्वेश्चन आया तो फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू योर माइंड इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच यूनिट? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1 and unit 1 is nothing but a summation of entire units of economy. करेक्ट? अब क्वेश्चन बहुत टारगेटेड है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए स्टेट ऑफ इकोनॉमी मस्ट बी स्टेबल. इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट हैज डन सम रिफॉर्म्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर सम रिफॉर्म्स इन द लास्ट 10 years. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, अब उसी में कुछ कमियां हैं, कुछ दूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टकमिंग्स है. वी हैव टू सॉल्व दैट शॉर्टकमिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर दोस रिफॉर्म्स दैट यू कैन रिमेंबर? बताइए फटफट. सम रिफॉर्म्स. जीएसटी, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं भूलना है ना यार. नेवर फॉरगेट इंक्लूसिव ग्रोथ. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, वो भी तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही है ना. चलिए हो गया, तो उतना भी नहीं घुस जाना है कि पूरा उसी का चापती है, कुछ और भी सोचना है इन जनरल. जनधन योजना, जनधन योजना इज व्हाट? डिजिटल इंक्लूजन. सबका बैंक अकाउंट होना है, सब फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी फाइनेंशियल इंक्लूजन. उसके बाद थोड़ा सा घुस रहे हैं आप लोग ज्यादा डिटेल में, थोड़ा ऊपर ऊपर चलना है पहले. दैट इज गुड. स्कीम्स नहीं लिखना है, मतलब रफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिखना है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी जिसको बोल रहे हैं. वेरी गुड. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी. जो भी डिजिटल इंडिया में और क्या क्या आ सकता है? ई रूपी, यूपीआई, कैशलेस बनाने में. व्हाट अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट यू कैन रिकॉल ओवर द लास्ट 10 years? रफ रिमेम्बरेंस. मेक इन इंडिया इज ऑब्वियसली देयर ना, बट दैट इज नॉट अ रिफॉर्म, दैट इज जस्ट अ पॉलिसी. रिफॉर्म मतलब कुछ नया लेके आ गया मोदी जी. भारतमाला परियोजना से ज्यादा अच्छा एक वर्ड है
Exactly, we call it gati shakti. Remember what is gati? Transport. And if your logistic sector is itself very expensive, my friend, how you are going to progress? So economic reforms mein gati shakti is one of the landmark that you have to remember. अब ये बता रहे ही नहीं कि इसमें जाके रिसर्च करने लगे, जो बता दिए हो गया, ये एग्जाम में आप आएगा ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 5 चीज है हो गया, बता दी, बहुत है. डोंट सर्च इनटू अदर थिंग्स, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस 75 क्वेश्चंस ब्लाइंडली. आपसे ज्यादा मेरा ऊपर प्रेशर है, बात समझ रहे हैं? आप तो फिर भी एग्जाम हॉल में कुछ भी लिख दीजिएगा, यस और नो? उकरा थोड़ी है यार, आप लोग कुछ भी तो लिख ही देगा ना, हम क्या करेंगे? विच फेस आई विल शो. क्वेश्चन नहीं आया, अब क्वेश्चन आएगा यहीं से, होते आया ही, होता रहेगा आगे भी, क्योंकि GS2 GS3 इज वेरी प्रिडिक्टेबल. कहां से पूछ देगा क्वेश्चन कोई भी, करेक्ट? नाउ सो दिस हैज बीन डन. अब पूछ रहा है क्या? हाउएवर सर्टेन मोर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. डन. अब उसमें क्या लिखेगा उसको लिखिए तो थोड़ा सा, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है, इसके अलावा भी ना. व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर? अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि व्हाट मोर कैन बी डन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हाउ वेल मोर, हाउ इन अ बेटर वे, हाउ इन अ नुआंस्ड मैनर कैन वी फर्दर प्रोग्रेस, उसके लिए कुछ की टर्म्स आंसर्स का समझना पड़ेगा. इकोनॉमी है, दिस इज इकोनॉमी ना. एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? What is the currency of economic growth? See, these are structured reforms, na? GST is a structured reforms. All these are structured reforms. Tell me, what is the currency of economic reforms? Economic growth? GDP, not per capita. GDP itself is the currency, na? How do we know someone is growing? By the GDP we know. So my friend, see, GDP has two things. Don't write, just think. Land, labor, capital, and the person who brings entire things together. We call it entrepreneur. Now these 4 people, they come together to produce something, and whatever they produce, that is known as output. Now who purchases that output? Suppose this is the GDP is produced, agricultural ho, secondary ho, tertiary ho, kuch bhi ho. This is the production, na? This is output. Now who will purchase this output? They will make this input denge ye log, they will produce something. Now this production will be purchased by people. Suppose we purchase this marker that is produced by 4 people, land, labor, capital, entrepreneur. This marker is purchased by us. Who are we? Consumer. In economy, we call this consumer household. Who else can purchase this? Government will purchase it for government schools. Yes or no? So one is the government. Sarvasya will purchase it for providing education service. It means we are investing 20 rupees in this marker, and with this 20 rupees we'll make a lot of money. Yes or no? This is one component of our service delivery, correct? So this is investment by industries. This is education industry, investment by industries, private sector, and else this will be exported outside, माने to the external world. यही तो होगा ना यार, ये लोग बनाएगा, ये लोग खरीदेगा. So this will be export import का ये काम आएगा, मतलब GDP will be exported, मतलब external sector. Now my friends, see, if the GDP को grow करना है, this is supply side, this is demand side. If GDP has to grow, either this has to be increased or this has to be increased, correct or not? In order to improve this or in order to improve this, you have to have a very efficient supply chain management, जिसमें logistic cost should be less. जैसे हाजमोला 1 रुपया का मिलता है यहाँ, ना आप दापोर रिजो में जाइए 2 रुपया का हाजमोला मिलेगा, 1 का 2 हो गया. कैसे ये स्कीम आ गया 1 से 2?
ट्रांसपोर्टेशन, उतना ऊपर कोई लेके जा रहा है बोला, वो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, जैसे दापोरिजो का जीडीपी तो 2 रुपीज हो गया ना, लेकिन ईटानगर का जीडीपी 1 रुपया हुआ, तो कैसे पॉसिबल है ये? लॉजिस्टिक कॉस्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी. If the share of logistic is more, it means your transportation is very expensive. So this is not a good thing. This is not something to be proud of. Why? Because this chain is getting longer, longer and longer and longer. This is the problem of inefficient supply chain. So economy का सारा problem, my friend. अच्छा, खराब नहीं पाना है. दापोरिजो में 1 ही रुपया है. सॉरी, हाँ, सॉरी शक्तिमान, राइट. हम तो नहीं खरीद पाया है कभी 1 रुपया, 2 ही रुपया देना पड़ा है. See, if we move if we understand this, that this is how economy works, this is how every economy will work. Now the question is, what more reforms are required to further boost this particular economic growth? Reforms here, reforms here, reforms are needed here, reforms are needed in supply chain, reforms are needed in transportation, reforms are needed in more tax collection, revenue, income. और क्या होगा? रिफॉर्म्स, यही तो है. तो ये तो आपको एनी टाइम तो 4 पॉइंट देके जाएगा. इंडिया का इकोनॉमी सप्लाई ड्रिवन है ना डिमांड ड्रिवन है? डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, करेक्ट. हाउ द डिमांड विल इंक्रीज? एम्प्लॉयमेंट. हाउ इट विल बी देयर? लेबर रिफॉर्म्स. ऑलरेडी लेबर रिफॉर्म्स आर इन पाइपलाइन, करेक्ट और नॉट? So always think in these terms. Every economic GDP will be increased like this. So this has to be the frame of mind. एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर को हाउ डू वी प्रमोट एग्रीकल्चर? माय फ्रेंड, एग्रीकल्चर को इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में देखिए दिमाग में. एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट यू नीड? लैंड, सीड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यही सब चाहिए ना यार, सॉइल. तो सबका एक एक स्कीम, तब एग्रीकल्चर जीडीपी प्रोड्यूस होगा. अब एग्रीकल्चर जीडीपी को मार्केट ले जाना है, व्हाट डू यू नीड? सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एग्रीकल्चर, एमएसपी, पीडीएस, फलना ढिमकाना, ऑल दिस थिंग्स ना. हाउ विल यू राइट इट? लिखिए एक लाइन, डेमो दे रहा है बस, हम लिखाएगा नहीं ऐसे आंसर, रियली समझ रहे हैं? हम बोर्ड पे खुद लिखेगा, इनपुट होगा. जस्ट राइट इसमें, इसका सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. राइट द सेकंड पार्ट हियर. However, in this question, however, further reforms are required, and as per economic survey. अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोला है ऐसा, हम बोल रहे हैं, ठीक? पर जाके पढ़िएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऐसा ही बात बोल रहा है. क्या बोल रहा है इधर देखिए, लेबर में प्रॉब्लम है, लेबर को अगर बढ़ाया जाए तो जीडीपी बढ़ेगा, बट लेबर को इंक्रीज करना मीन्स व्हाट? लेबर हैज 2 प्रॉब्लम्स, अवेलेबिलिटी एंड स्किल. डू वी सफर फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर? स्किल. तो नीति आयोग सजेस्ट स्किलिंग ऑफ लेबर. सॉरी, नीति आयोग नहीं ना, इकोनॉमिक सर्वे ना, यस, इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट स्किलिंग ऑफ लेबर. अब लेबर से वन डेटा शुड कम टू योर माइंड, दैट 45% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर ओनली एम्प्लॉयबल, रेस्ट 55% आर नॉट एम्प्लॉयबल इन इंडिया, करेक्ट? तो लेबर में सबसे, इकोनॉमिक सर्वे कहता है स्किलिंग प्रॉब्लम, करेक्ट? उसके बाद लैंड. लैंड का मतलब क्या हुआ इंडस्ट्री में? Suppose an educational institute has to be set up. The problems related to land means what? Policy problems, compliance, notice, clearance, environment clearance, फलना clearance, ढिमकाना clearance, यही तो ना, correct or not? So bureaucratic hurdles, delays always will be available. Land का मतलब हो गया main input, जिसका ऊपर वो पूरा इंडस्ट्री सेटअप करेगा, होगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा. उसके बाद कैपिटल, there is a problem with the capital availability, उसमें लिखिए सेकेंड. Policy and compliance reforms. Policy and compliance reforms. मतलब उसको डीरेगुलेट एंड सिंप्लीफिकेशन, यू कैन राइट इट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डीरेगुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डीरेगुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट और आ रहा है ऑनलाइन में ये आ रहा है कि लेबर में भी फीमेल लेबर फोर्स को और प्रमोट किया जा सकता है. तो ये मतलब ऐसा लाइन है कि गलत कोई कर ही नहीं सकता इस लाइन को,
ऑल्दो इट डज नॉट मेक सेंस हियर एग्जैक्टली, बट चलता है इतना, है ना। तो फीमेल को घुसा दिए, इंक्लूसिव ग्रोथ भी तो घुसाना है ना कहीं यार। तो फीमेल उसमें चला गया, फीमेल लेबर फोर्स कैन बी इम्प्रूव। उसके बाद मोस्टली दीज आर द थिंग्स लिख सकते हैं, और कि सप्लाई चेन कैन बी फर्दर मेड मोर इफिशिएंट, पीएम गति शक्ति कैन बी मेड मोर इफिशिएंट, यू कैन राइट सप्लाई चेन कैन बी मेड मोर इफिशिएंट। उसके बाद स्ट्रीम लाइनिंग द लेबर लॉज, वेरी गुड, यही सब तो होगा ना यार। हो क्या स्ट्रीम लाइनिंग फर्दर, और अच्छे से ऑलरेडी कर चुका है गवर्नमेंट, बट लिख देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ लेबर लॉज रिफॉर्म्स, ठीक है। So this is the state of economy that you have to keep in mind. This is a general question which you can 100% expect a question on this line in the examination. आएगा ही आएगा, उसको लिखना है, थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करना है, ज्यादा हाई फाई मारिएगा तो फंस जाएगा इसमें। ये है बेसिक आंसर, जो प्रैक्टिकल आंसर एग्जाम में आप लिख पाओगे। Beyond this, it depends upon your consistency with the preparation. Nothing else is required. की टर्म्स पकड़ना है जीडीपी का, ये है गेम, और इस गेम के आसपास द क्वेश्चन विल मूव। एवरी आंसर इन इकोनॉमी मूव्स अराउंड द इनपुट एंड आउटपुट। एवरी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हैज इनपुट एंड आउटपुट, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट है तो एमएसएमई को और प्रमोट करना पड़ेगा ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। आएंगे उस पे, एग्रीकल्चर वाले पे देख लिया जाएगा, उसका एक आंसर लागू कर लीजिए इसमें कुछ भी। जैसे अब देखिए ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डबल द फार्मर्स इनकम, करेक्ट, डबलिंग द फार्मर इनकम। नाउ मोदी जी का बहुत अच्छा अप्रोच था। सपोज कीजिए कि जितने भी एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं दे अर्न 15 लाख करोड़ रुपीस divided by total number of agricultural farmers. Suppose the total number of agricultural farmers is 15 crore. Suppose करिए, डेटा इजी हो जाएगा। तो what is the income of one farmer? If 15 lakh crore is the total agricultural income, what is the income of per farmer? करोड़ करोड़ कट बचा कितना, यानी a farmer is earning 1 lakh rupees per year. मोदी जी ने बोला इसको डबल कर देंगे, दिस इज डबलिंग फार्मर्स इनकम, करेक्ट। टू ऑप्शंस आर देयर, आइदर यू इंक्रीज दिस और यू डिक्रीज दिस। इंक्रीज होगा, अगर ये 15 लाख करोड़ ही रह जाए एंड दिस बिकम्स 10 लाख करोड़, 10 करोड़, क्या ये 1 लाख इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बढ़ जाएगा ना, इट विल बी 1.5 लाख। यही हुआ है। तो फार्मर कहाँ है? वेयर इज फार्मर? फार्मर इज मिसिंग in food processing and MSME industries. Government is giving loan on MSME basis in the village. That person is now not being included as a farmer. गवर्नमेंट अपने डेटा से हटा दिया, हमको बता दिया बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ फार्मर्स ही आप घटा दिए, करेक्ट। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, उतना घुसने में मजा लगता है, लेकिन वही मजा नहीं आएगा उतना लिखने में, है ना। तो मजा आएगा क्लास में, बट विल नॉट बी एबल टू लर्न। सो वी आर लेट्स कीप इट एग्जाम स्पेसिफिक ओनली। अब आते हैं हम लोग इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, राइट, issues related to planning. We'll come to it once we summarize the entire Indian economy, once we cover all the units. Now, in 1950s, there were two options. First, we know either we go to heavily industrialization plan, correct. How do we go for it? कैसे जाएंगे हम लोग इसमें heavily industrialization करने के लिए? How do we go? Either the government should control all the means and methods of production, or it should be a mixed bag. अब अगर if the government wants to control the entire modes and means of production, it means the government has to follow the USSR path. But in India, we adopted democracy and we adopted right to property, so we cannot go that way.
So Nehru ji decided to go for a socialist model. What is a socialist model? It is an common, it is a midpoint between capitalism and communism. We cannot go the communist way, na? Neither we could go the capitalist way. So we adopted socialism. This is all clear. So socialist term is what you know. Hoga. After that, you also know that we started the policy of 5-year plans. The next learning that you have to keep in mind after forward and backward linking in economy is in every answer of unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you have to know the theme, the heading of which 5-year plan that unit was introduced. Every unit of economy was the major theme of a 5-year plan which India adopted. Okay? And India adopted the 5-year planning. There are two types of planning available: imperative planning and indicative planning. Do you know the difference between them? पीटी का क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट ईयर जरूरी होगा, इस साल नहीं निकालने से। बताइए इंडिकेटिव एंड इंपरेटिव प्लानिंग के बीच में डिफरेंस, कैन यू डिफरेंशिएट? व्हाट इज इंडिकेटिव प्लानिंग? वेरी गुड. व्हाट इज इंपरेटिव? imperative centralized planning. Okay, imperative planning is centralized planning. Indicative planning is government acts as a facilitator. It identifies and it tells the people. We followed which kind of planning? Imperative. And we decided that we will discard this imperative planning later on, but we failed to do that. So next key term है, next take away है आपका 5-year plans को जानना. अब देखिए ध्यान से, नेहरू जी का टाइम पे there were 3 FYP1, FYP2 and FYP3. What was the main theme of FYP1? आंख बंद करके क्या? The primary sector. Second 5-year plan में, third 5-year plan में, mix of both. Correct? Now, when you focus on agriculture, what is the most important ingredient of agriculture? Water. And government built a lot of dams. Correct? Remember it. When you build a lot of dam, it is capex. But from where you will source the money? The government started printing. RBI को बोला print, तो RBI print. अब जब आप ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे, when you will print more, what it will lead to? Inflation होगा. You will. But Nehru ji said printing is good when this printing is being made for making capital infrastructural projects. So this was the norm in the first 3 5-year plans. Then comes the era of Indira Gandhi. Now third 5-year plan is also famous for Green Revolution. Remember this. Just remember this third 5-year plan. होगा. Now Mahalanobis word is important where? Second. बहुत सुंदर. Now Indira Gandhi comes. Indira Gandhi के समय में there is FYP4, FYP5 and FYP6. Correct? FYP4, 5 and 6. Now 4, 5 and 6 is mostly related to unit 2 of our syllabus. Inclusive growth, sustainable growth, not sustainable, basically inclusive growth ना, जिसमें all the poverty welfare measures, poverty eradication, poverty alleviation measures, मनरेगा, rural employment, मतलब जो भी है, mainly मनरेगा and all those aspects were kept in mind. Minimum needs program, फूड आया, ये सब रीजनल डेवलपमेंट का भी एक कंसेप्ट आता है इस समय, बट मोस्टली इंदिरा गांधी फोकस ऑन यूनिट 2. व्हेन यू विल फोकस ऑन यूनिट 2, पॉवर्टी, सोशल वेलफेयर, you will do more revenue expenditure or capital expenditure? Revenue expenditure, common sense, correct? So this was an era of very high revenue expenditure. This was an era of very high capital expenditure. This is the difference. Garibi lao, Indira lao, Garibi hatao. This was the main focus on 4, 5 and 6th. After the 6th 5-year plan, then comes the time period of Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi is famous for FYP7, and FYP7 is known as infrastructure plan.
1985 to 1990. Okay, see, 4th, 5th and 6th, this started in 1970. अरे रोलिंग हो रहा है ना, बीच में नहीं था इंदिरा गांधी, पोस्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वर गोइंग ऑन. सो 85 के बाद शुरुआत होता है 7th 5-year प्लान का, एंड 7th 5-year प्लान इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स. Why? Because a lot of infrastructure were being roads and national highway NHAI इन लोग का सबका establishment हो रहा है, and they started building roads. So this is the 7th 5-year plan. Whenever you are writing answers of unit number 9, every answer must have FYP 5-year plan 7th in your answer as introduction or conclusion or in middle. If you are writing answers of agriculture, 3, 1 are very very important. होगा 1 and 3. When you are writing answers of industries, FYP 2, industrial policy resolution, all these things becomes important by default. होगा. Now immediately after this part, already revenue expenditure का hangover was there, lot of fiscal deficit was there, but main problem was India was facing a problem of hand holding of industries. Because of hand holding of industries, the industries of India, indigenous industries of India, they were not having any competition, and once they were not having any competition, they failed to produce. If they fail to produce, you will be forced to import, and once you are forced to import, a lot of forex goes out of the country. So India suffered from a problem of not domestic crisis, because domestic crisis can be solved by printing money, but can a country print dollars? Yes, but what will happen? All the entire countries will block, will ban like anything to that particular country. So you cannot print dollars. You have to have dollars. Only two options is left. You have to borrow or you have to export. How will you export when your industries are itself not performing? So ये problem आता है 1990 में. दो तीन problem होता है जिसको we call it crisis, and that crisis का बाद a budget of new India was launched. We know this fact. So 1991 का reforms होता है economic reforms, और इसी economic reforms के बाद मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव प्लान आता है. We call it the 8th 5-year plan. So 8th 5-year plan was continued from 1992 to 1997, and it focused only on what? Liberalizing everything, inviting the private sector to come, and opening the economy by looking outward, export oriented economy. We call it globalization. So liberalization, privatization and globalization. Unit 8 and 8th 5-year plan, remember it. होगा यूनिट 8. मतलब देखिए सबसे पहले ये रिफॉर्म बजट प्रेजेंट हुआ, नेक्स्ट ईयर 8th 5-year plan आया होगा. So this focused on this part. Come to the 9th 5-year plan. 9th 5-year plan will be a continuation, will be an extension, and it focused on women empowerment mostly. Not much significance we can draw from 9th and 10th 5-year plan. Now the next is 11th 5-year plan and 12th 5-year plan. This 11th and 12th 5-year plan is known for inclusive growth, right? Sustainable growth. We have inclusive growth, faster and towards more faster inclusive growth. इंदिरा गांधी के फैक्टर को हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कम और मोस्टली हम लोग ये बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर पीरियड, which created a lot of economic problems, which created a lot of monetary problems, monetary pressures on the government's budgetary profiles. होगा. Now ये है टेक अवे. आंसर्स में नहीं घुसा रहे हैं अगर आप, तो यू आर मिसिंग आउट on 1 mark. This shows your academic depth. Just by mentioning this FYP, this shows your economic depth, academic depth. Now not economic depth. Now अभी तो economic depth का तैयारी चल रहा है. Come back to the first part. Who started making the 5-year plans? Very good. Who was the chairman of planning commission? Options: prime minister, president, finance minister. Prime minister. So planning commission was created. What was the model of economic growth? Socialist. Was this planning or was this entire scheme of 5-year plan successful? See, economy में ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं, middle.
Yes, no, yes, no, depending upon the political consideration. Write one line. And this is the first technical question from today's. In fact, second one. लिखिए एक बार. Right? How did how did Nehruvian how did Nehruvian socialism how did Nehruvian socialism shaped SHAPED? How did Nehruvian socialism shaped the trajectory of India's planned economic development of India's planned economic development post independence? Take 5 minutes and write the answers. देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इसमें. पहला बात कि नेहरू जी का मॉडल था, क्या जो भी था, 5 ईयर प्लान था, इंपरेटिव प्लानिंग था, लाख बुराइयां थी उसमें, but it truly shaped the trajectory of India's plan. Now this socialism was undoubtedly successful because of this 4 point maximum. However, it could not achieve this and this. दिए होगा आंसर. अब this क्या है उसको भरिए. Fill it. No, it is important. It's good. Make it more formal. Don't make it passive.
हाउ डिड नेहरूवियन सोशलिज्म ना शेप्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज प्लान, यानी अगर हम लोग इकोनॉमी को प्लान करके ग्रो कर रहे हैं तो उसमें सोशलिज्म कैसे एक रोल प्ले किया है। तो क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? क्वेश्चन फोकस कर रहा है सोशलिज्म का फीचर्स पे और बोल रहा है कैसे इंडिया में आपको सोशलिस्ट फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है क्वेश्चन। उसमें ये नहीं लिखना है कि 200 साल का ब्रिटिश राज के बाद हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो जिसके बाद लोगों ने कह रहे हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ये इसी में आप 50 वोट खा गए। होता है, पहला क्लास है ना। मरीना, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लाइन बोलिए। Nehruvian planning was based on imperative model of development which led to 5-year plans because at that time India was at a very nascent stage lacking everything as the Britishers took। जो भी, ये तो हो गया गाजा लाइन बढ़ाने के लिए, पहला लाइन के लिए ठीक है, थोड़ा कंटेंट आ गया। अब आता है सवाल दूसरा कि हाउ इट शेप्ड, मतलब व्हाट आर द फीचर्स डू वी सी, क्या क्या फीचर्स है, उसी फीचर्स को पैराग्राफ में नहीं लिख के 4 पॉइंट में लिखना है। अब आप ही के इंट्रोडक्शन से हम इसका 4 पॉइंट निकालता है। कैसा? पहला फीचर, सोशलिज्म में क्या होता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक मॉडल? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, वी हैव दैट। सेकंड फीचर, गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन, हाउ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन divides the industry into 4 categories, type A, type B, type C, remember, you have to remember this, correct or not? अरे टाइप ऑफ इंडस्ट्री नहीं बांट दिए थे हम लोग, ओनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल टेल, गवर्नमेंट से बचा तो आप प्राइवेट, तो छोटू इंडस्ट्रीज को वो लोग दे दिया पूरा प्राइवेट को। तो एक लाइन लिखना है खाली उसमें, है ना, लिखिए उसमें द सोशलिस्टिक फीचर्स इन इंडियाज इकोनॉमी, द सोशलिस्टिक फीचर्स इन इंडियाज इकोनॉमी is represented by first, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जिसको इंपरेटिव प्लानिंग बोल सकते हैं अगर याद हो एग्जाम में तो, नहीं तो गांवलिया टर्म है ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नेक्स्ट, if we go ahead, if we move further, we can say the dominance of public sector or public sector dominance। अच्छा, सोशलिज्म का कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जितना भी सोशलिस्ट कंट्री है, व्हाट विल बी देयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इफ अ कंट्री इज सोशलिस्ट, ओके, व्हाट विल बी द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्राइमरी मतलब वो पूरा प्राइमरी नहीं बोल रहे, मतलब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? 100% एग्रीकल्चर ना, तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, करेक्ट और नॉट? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब आज भी वी फाइंड वेस्टेजेस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, यस और नो? खेती बाड़ी, गुड। और क्या होगा? कैन वी से सोशलिज्म फोकस ऑन सोशल वेलफेयर? तो यस, देयर हैज बीन अ फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। अब देखिए, ये हो गया कॉमन पॉइंट, ये लिखेगा आम स्टूडेंट लोग, लेकिन आपको इसमें क्या चाहिए? 5-year plans ना। द टेस्टिमनी इज plan number 5, plan number 6, 5th and 6th 5-year plan। The first 5-year plan, it laid the groundwork of agriculture dominant economy। Centralized planning via planning commission, समझ रहे हैं बात? ये है नंबर एक्स्ट्रा। This is one part, this is another part, this part will come when you will dedicate your entire day to the preparation of next day Anushashan class। This can only be possible, the utility of Anushashan is live, not recording। रिकॉर्डिंग, अगर आपका कोई क्लास क्लैश हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देखिए, इसको रिकॉर्डिंग मत देखिए। बात समझ में आ रहा है?
ये एक संस्कारी तरीके से होगा, आगे बढ़ेगा, तब जाके हम लोग का दिमाग में सब चीज घुसेगा, और जब घुसेगा काम खत्म है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। दिस इज वन पार्ट, बट दिस इज नाउ कम पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। इसमें आपको एग्जांपल दीजिए, ओएनजीसी, गिव द एग्जांपल ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड ना, पुराना है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे, आज भी हम लोग देख सकते हैं उस चीज को। इट शेप द ट्रेजेक्टरी, इंपॉर्टेंट आइटम्स। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल आज भी हम लोग के देश में बहुत जगह पे दिखाई दे रहा है। 1991 के बाद भी रिफॉर्म, बट स्टिल द एग्रीकल्चरल मार्केट इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। अरे एपीएमसी मंडी है ना, स्टिल द एपीएमसी मंडी इज व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोलिंग। ये कब होगा, जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू, देन आई विल अगेन टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट द टॉपिक्स। One of the most important feature of this Anushasan course is I will tell you integration of topics. This is one of the broad features. And integration बताना है, इसीलिए कम पढ़ाई कीजिए, सोचिए ज्यादा। The more you study, the more you will go into the path of non-selection. लिख लो आप इस बात को। हाँ, बता रहे हैं आपको। Main game is visualization of 150 words of an answer. 10। और इतना पढ़ाई आप लोग कर चुके हैं, trust yourself, my friend. If you are answering it, you are not sleeping, it means you have studied. ना, यॉर्निंग वॉर्निंग होगा, माहौल है ऐसा, एम्बियंस है, बट चलेगा इतना, नो प्रॉब्लम। और सैड नहीं रहना है दोस्त, सैड मत रहिए, बहुत होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, और क्या मतलब। अरे इस बार 1200 लोग नहीं सिलेक्ट होगा ना, 400 पीपल विल बी सिलेक्टेड, तो 1200 तो नहीं होगा सिलेक्ट, तो कौन सा इतना बड़ा बात है। पर वही वाला अप्रोच नहीं, अंकल लोग जो बोलता है, अरे तुमको इतना लोग से क्या मतलब है, तुमको तो एक सीट से मतलब है ना, तो ये सब बात हम नहीं बोलेगा। इतना जानिए कि 400 लोग सेलेक्ट होगा इंटरव्यू में, वहां तक बस पहुंचना है, फाइनल सिलेक्शन का सपना भी नहीं देखना है। लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क हैज टू बी डन, ओके, वी विल डू इट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ उत्तर प्रदेश पीसीएस, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूपी पीसीएस 2019। ये क्वेश्चन आया था, स्टैटिक है, और लिखना मुश्किल नहीं है, इसको लिख तो देंगे आप लोग एग्जाम में, लेकिन वही है कि ये सब चीज गेम है, इसमें गेम चेंजर होने वाला है ये सारा आइटम इमीडिएट। ठीक, नाउ मूविंग अहेड। अब आता है कॉन्स। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन कि सर क्या कॉन्स लिखना पड़ेगा, हाउ डिड नेहरूवियन सोशलिज्म शेप द ट्रैजेक्टरी। हमको नहीं लगता है दिस आस्किंग अबाउट कॉन्स, दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट कॉन्स। लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस में वी कैन just mention, अभी don't focus on concluding line, focus on the first structure of the question, okay, conclusion will is very simple to understand, main thing is introduction, and introduction में इस तरह के क्वेश्चन में जनरली इसका फीचर्स लिख देना था और why we adopted it, पर आप लोगों ने शुरू में, कुछ लोगों ने क्या किया है, why we adopted ये ज्यादा लिखा है, वो भी ठीक है, पर थोड़ा सा पैसिव हो जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहा है उसको ना, ड्यूरिंग द लास्ट 200 years ऑफ ये वो जो भी ना, तो उतना उसको अवॉइड करने से ठीक है। नाउ अब आइए प्लानिंग का प्रॉब्लम्स। राइट वन क्वेश्चन, टुडेस क्वेश्चन लिखिए एक और। राइट, evaluate the effectiveness, evaluate the effectiveness evaluate the effectiveness of the planning commission in achieving, evaluate the effectiveness of planning commission in achieving inclusive and sustainable growth, sustainable growth नहीं, sustainable development. This is a previous year question from Bihar. यूपीएससी जनरली यूनिट 1 से उतना क्वेश्चन नहीं पूछती है, एक एक क्वेश्चन आता है, जनरली एम्प्लॉयमेंट से आता है ना, तो यही ऑप्शंस है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेसिस पे चलना है इसको लेके। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई टू आंसर इट। नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट प्लानिंग कमीशन इन जनरल, ओके, you don't have to talk about the administrative problems of this planning commission, only direct question is asked कि क्या, कितना ज्यादा inclusive growth
and sustainable development में planning commission has achieved. Now this question is a mix of unit 1 and 2. So you have to know the component of sustainable development first, you have to know the component of inclusive growth, and then you have to remember कि प्लानिंग के 5-year प्लान से क्या क्या चीज है जो हम लोग को ध्यान रखना है. ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट द इंट्रोडक्शन. व्हाट विल वी राइट इन द इंट्रोडक्शन हियर? व्हाट विल वी बी राइटिंग? इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कमीशन. सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का डेफिनेशन क्या था, प्लानिंग कमीशन क्यों बना, ये सबसे पहला काम है इसमें. प्लानिंग कमीशन क्रिएटेड इन दिस ईयर, ये कॉमन सेंस है, क्रिएटेड इन दिस ईयर. अब देखिए सोशलिज्म का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वी अटेम्प्टेड द क्वेश्चन ऑफ सोशलिज्म. नाउ दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड. एक ही क्वेश्चन पूछेगा ना, बट वी हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट, so we'll use that content. Planning commission was one of the outcome of the socialistic mode of development adopted by India, which focused on imperative mode. So planning commission was one of the tools of imperative planning. Can we write it like this? Why not? Yes. कंटेंट तो वही है ना, उतना ही कंटेंट में 2-3 आंसर का कंटेंट में एक यूनिट को प्रिपेयर करना है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुशासन माय फ्रेंड. ओनली 2-3 आंसर्स का कंटेंट में वी हैव टू प्रिपेयर 1 यूनिट, नथिंग एल्स. नो लेफ्ट नो राइट होगा. So this we can start. After that what we have to write over its working in the last, कब तक चला, till which year planning commission was in place? 2017. So in the last 75 years of its working, it has achieved many milestones, and one of those milestones are inclusive growth. अब can you remember any schemes related to inclusive growth? Yes, poverty reduction. It has significantly helped in lowering the poverty rates. It has significantly given homes to the people, electricity. कोई तो स्कीम लिखना पड़ेगा ना उसमें. 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, you have to write it. Minimum needs program, you have to write it. Planning commission का उसके बाद और क्या इंक्लूसिव ग्रोथ में लिखेगा? लिखिए लिखिए टिप्स लिखिए. इसको घर पे भी लिखना पड़ेगा, इसके आंसर को ठीक से घर पे जाके इसको लिखना पड़ेगा. लिखिए evaluate this answer on few components. एग्जाम्पल इंक्लूसिव ग्रोथ का कंपोनेंट क्या है? हाउ फार या हाउ मच डेवलपमेंट या कितना परसेंटेज पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाले हैं, जो भी एक डेटा, रफ डेटा लिख देना है कैजुअली. सो पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड कोई डेटा, क्योंकि देखिए यूनिट 4 में द सिलेबस ऑफ यूनिट 4 मेंशंस अबाउट पॉवर्टी एलिविएशन, इसीलिए सिलेबस का टर्मिनोलॉजीज हैज टू बी रिमेंबर्ड. ओके, सो पॉवर्टी एलिविएशन के कंपोनेंट में देखिए हाउ फार इट हैज वर्कड. उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेक्टोरल डेवलपमेंट. उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर प्लानिंग कमीशन वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. यही तो 3 कंपोनेंट होगा इंक्लूसिव का. सबका साथ सबका विकास. हाउ विल एवरीवन ग्रो? द ग्रोथ मस्ट बी इवन, इट शुड नॉट बी अनइवन. अब आपके पास 3 कंपोनेंट है. पॉवर्टी के मामले में इट इज ऑलवेज अ गुड फिगर होगा. चलिए, सेक्टोरल डेवलपमेंट, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, डिड दे ग्रो? some grew but some could not. Come to regional balance development, you have a lot of data my friend. Still there is a presence of bimaru states. Why after 75 years we are still suffering from poverty? इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, बाइनरी. दो चीज का प्रॉब्लम. जैसे ग्लोबलाइजेशन, when globalization came, it affected women in 2 ways. First, it created a lot of opportunities for the women, globalization. Secondly, it opened a lot of scope for crimes against women also. yes or no? माने पैराडॉक्स इसको बोलते हैं, बाइनरी, द थ्योरी ऑफ डुअलिटी वी कॉल इट. एक चीज आया तो खराब भी है अच्छा भी है ना, इसको वी कॉल इट द थ्योरी ऑफ डुअलिटी और बाइनरी डुअलिटी वी कॉल इट. सो पॉवर्टी एलिविएशन में गुड पॉइंट बैड पॉइंट बोथ यू कैन राइट. रीजनल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में बोथ पॉइंट यू कैन राइट, एंड यू कैन से दैट मे बी द टास्क इज स्टिल इनकम्प्लीट एंड वी होप द नीति आयोग टू फर्दर फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव. समझ रहे हैं बात? किस तरीके से कंक्लूजन होगा इसका. इसके बाद लिखिए इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या क्या कंपोनेंट है. डू यू रिमेंबर?
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्लास पीटी, क्या क्या आता है अगर हम बोले इंडिया सस्टेनेबली डेवलप कर रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स कम? हे भगवान, ब्रेटन वुड्स, सॉरी ब्रेटन वुड्स कह रहे हैं, क्या नाम था वो लड़की, वो लेडीज का जो चेयरमैन थी, नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट जिसने दिया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट ना, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट का देयर वर 3 आउटकम्स, व्हाट वाज देम? हे प्रभु हे हरिराम, ये क्या हुआ? अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करना है, 3 कंपोनेंट था तो पीटी में। दे आप लोग कैसे पास किया है पीटी? हम भी भूल गया था, देखिए बेंट ऑफ माइंड का गेम है, बस इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट ना। हाउ विल यू गॉज द डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल एरियाज? सी एजुकेशन, मुंह खुलने लगा, वाटर मैनेजमेंट मतलब वाटर अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट ना। अब इसका कुछ कुछ डेटा याद आए तो लिखिए, लर्निंग आउटकम्स का लिखिए बारे में कुछ कुछ, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। ये कब पढ़ते हैं हम लोग? ये हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के समय, आई विल मेक यू रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन तो इंटीग्रेट करके आ गया ना, यूनिट 1 एंड 2, करेक्ट? वी नॉट स्टडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ना, जब हम पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे उसको वापस, आपको नए नए फैक्ट्स देगा। यही है आंसर लिखना था। अब इसमें आपको यस नो यस नो यस नो करके यू हैव टू प्रोसीड। हाँ किया बचा ओके, ओवरऑल मिक्स्ड बैग, दिस इज हाउ you proceed. Income inequality can also one of the important points of sustainable development. So question है, evaluate the effectiveness. This is how you evaluate ना, you have some component, checklist बना रहे हैं आप, this is the checklist, the indicators, this is scientific understanding of the paper my friend, you have to segregate it, होगा? So this is the planning part. Now open the notes that you have all got और online में I have shared the Google Drive link, you can refer it from that part. Now in the notes please open page number 5. There is issues related to planning, mila? There is issues related to planning, page number 5. You please go to page number 6. Once you go to page number 6, exact points में there has been mention of planning commission, achievement of planning commission, failure of planning commission, other features. 2 point you know, उसको skip कर देना है ना? 2 point जो आप हमेशा लिख सकते हैं एग्जाम में, you don't have to waste time. Just tick on 2 more points and just memorize it. Simple. Today itself. समझ रहे बात? मतलब 5 मिनट से ज्यादा अगर आप देंगे एक पेज में तो काम आपका खत्म। और मेमोराइज करने के बाद उसको अपने आंसर कॉपी में लिख लेना, जिसमें आप अभी नोट्स बना रहे हैं ना, फटफट उससे चलते जाना। और क्लास में ब्लू पेन लेके आ रही है या ब्लैक, लेकिन जब वापस अपडेट करिए उसको, है ना, तो मेक इट वाया सम अदर पेन, बट डोंट यूज दैट पेन इन रेगुलर प्रैक्टिस। अपग्रेडेशन एट होम must be done via red pen. In class carry only 1 pen. This way इंटीग्रेट होकर मैटर बहुत अच्छा निकलेगा। और सिर्फ आपका एक कॉपी होना चाहिए GS-3, GS-2, GS-1, GS-4 का, और वही कॉपी 15 मार्च के बाद डेली 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 रिवीजन करना है, आंख बंद करके, जस्ट ट्रस्ट दैट ओनली नोटबुक। और ये नोट्स आप ले तो रहे हैं, बट इस नोट्स का ये नहीं कि पैसा दिए हैं तो पूरा एक एक पेज पढ़ लेंगे नोट्स का, वो टाइम वेस्ट है आपका उसमें। क्लास में हम खुद टिक बताएगा क्या पढ़ना है, उसको आगे बढ़ के छोड़ देना है, समझ के बाद। अब आइए नेक्स्ट पेज, उसमें देखिए पेज नंबर 8 पे, there has been a difference of नीति आयोग and planning commission. You know the difference, but just for a revision you can go through that difference. Now the questions are not asked from this region because it has been more than 6 years, 6-7 years. अब ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक ट्रांजिशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस केस में, तो you just have to be prepared on this part. Is it fine? Okay. Tomorrow we are going to cover unit 1 entirely. Employment, growth, GDP development एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये यूनिट को पढ़ के आइएगा नोट्स में से ओवरऑल। और कल हम लोग आंसर राइटिंग के मोड में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो वन क्वेश्चन टुमारो इज गोइंग टू बी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड वन क्वेश्चन इज टुमारो इज गोइंग बी फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट। मिला के एक क्वेश्चन देंगे, जीडीपी से रिलेटेड होगा, वो आपको देंगे। तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर, ओनली रीड यूनिट 1 टुडे, नॉट मोर देन 1 आवर। इफ यू आर डूइंग इट मोर देन 1 आवर,
you are going into the shell again. Okay, only 1 hour time is there, just go through ऊपर. ठीक है, तो hope I made sense. Hope I made sense का मतलब ये हुआ कि hope I was able to reach out my message carefully, clearly. So thank you everyone. See you tomorrow at the same time.